हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अग्रवाल यार। कैसे हैं आप लोग? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कंप्लेन करते हैं कि सर आपका फीस बहुत हाई है, सीए में सारे कोर्सेज का सर आपका फीस बहुत हाई है। आंसर इस फीस हाई नहीं है, इट इज एट पार विद द क्वालिटी दैट वी इम्पार्ट। बट फिर भी मैं आपको ये याद दिला दूं कि अब ओनली 2 days आर लेफ्ट। वो 30% वाला जो डिस्काउंट ऑफर है वो खत्म होने वाला है, जिसमें हम लोग क्लासेस ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे थे। अब वो ऑफर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सो इफ यू हैव नॉट बुक्ड द क्लासेस, आप वो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग है विच इज एप्लीकेबल फॉर योर 2020 मे एंड द नवंबर दिसंबर एग्जाम, मे जून एंड नवंबर दिसंबर एग्जाम ऑफ 2020 के लिए वो क्लासेस शूट हुई थी, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं सीएससी या सीएमए में, उसका एक ही मेन राज है, दैट इज कमिटमेंट टू योरसेल्फ। If you commit to yourself that you are going to do hard work, you will do the hard work. जैसे मैं बताता हूं, मेरा कंपटीशन केवल मेरे साथ है। मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं जो पहले था मैं उससे बेटर बनना चाहता हूं डे बाय डे। I aim always towards becoming better than what I was yesterday. This is called aiming towards excellence. आप ये नहीं बोल सकते this is the best. No, if I say this is the best, then and there the growth is gone. You understand? You cannot say that this is it. This is not it. Break the shackles. बाहर आओ वहां से। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने प्लेज किया था आज से कुछ महीनों पहले कि मैं डेली एक वीडियो डाला करूंगा। तब से लेकर के आज तक मैंने अगर 200 दिन पहले वो प्लेज लिया था अपने आप से, तो 200 दिन में मैंने 200 या उससे ज्यादा ही वीडियो डाले हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके अपना अकाउंटेबिलिटी दिखाऊंगा इस वीक के एंड तक। सो मैं आपके साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर रहा हूं विच आई वाज गोइंग थ्रू। ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मैं अपने बच्चों के साथ भी इस चैनल पर वो वाला वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो आपको सिखाएगा कि शैकल्स को कैसे ब्रेक करके बाहर निकला जाता है। एंड केवल आप ही अपने आप को मदद कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ योर शेल। आपका कंपटीशन आप है और कोई नहीं है। तो डिमोटिवेटेड मत फील करिएगा कि यार वो आपसे थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया आगे निकल गया। बिल्कुल नहीं, आपका कंपटीशन आप है। जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतना बढ़िया आपको सक्सेस मिलेगा और उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। वीडियो स्टार्ट्स नाउ, वॉच इट टिल द एंड। People have this reoccurring nightmare that there's something, some force that's got a hold of them and it's holding them down and they can't break free. No matter what they do, they can't break free from that force. Well, I'm here to tell you that thing in your nightmare, that thing that's holding you back, that thing that's dragging you down, that thing is you. There are two fundamental attitudes toward life and its sorrows. Those with the first attitude blame the world. Those with the second ask what they could do differently. It's much easier and much more gratifying to your basest desires to blame someone else for your misery. You know what's so funny? We want people to make guarantees to us, but we're not willing to make guarantees to ourselves. And that's the problem with some of you. You always want to blame other people. You owe you an explanation. You need to look at yourself in the mirror and say, why are you only giving 50%? What's wrong with you? You need to put yourself on punishment. You need to tell you no more TV, no more snacks, no more desserts. No, we working out now. You need to tell you that you owe you something. Every day I demand more from myself than anybody else could humanly expect. I'm not competing with somebody else, I'm competing with what I'm capable of. My number one competition is me. It's always you versus you. You gotta be the one to get up every morning, be disciplined, put in the consistent daily hard work, because that gains success. No coach, no trainer, no mentor, no boss can do it. You versus you. I value myself enough to give 120% or don't do it. There is no excuse for not living up to their fullest potential. No excuse. You walk out of this room, you owe yourself. I didn't get here making excuses. What changed? I changed. And I stopped being a victim. I stopped saying I've got to wait for good things to happen to me. And I said I'm going to grind. I'm going to fight. I'm going to work. I'm going to press toward. I'm going to learn. I'm going to do everything in my power every single day to become a victor and not a victim. Why? Because I owe it to myself. Can't nobody stop me but me.